Good morning, my dear students. How are you all? Hope you all are fine at your places. This video is for student of class 3rd. In this video, we will summarize the chapter number 4, some important cities of southern India. Okay, but first of all, I will discuss about your homework which I had assigned you in last class. So let's start today's class 3rd, term 3. Subject EVS SST. Chapter number 4, some important cities of southern India. Its chapter name. This is lecture number 3. The topic is summary lecture. This was your homework. Practice on A. Multiple choice questions. Chennai is the capital of. Here we have 4 options. Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka. So which one is correct? Chennai is the capital of. Yes. Which one is correct? Tamil Nadu. Tamil Nadu is correct. So हम Tamil Nadu को टिक करेंगे. Chennai is the capital of Tamil Nadu. Next. Number 2. Trivandrum is the old name of. त्रिवेंद्रम किसका ओल्ड नेम था? यस, तिरुवनंतपुरम, मद्रास, बॉम्बे, मैसूर. त्रिवेंद्रम इज द ओल्ड नेम ऑफ तिरुवनंतपुरम. ठीक है. नेक्स्ट सी. Number 3. Chennai is located on the coast facing A. the Arabian Sea, B. the Bay of Bengal, C. the Red Sea, and D. the Yellow Sea. So, which one is correct? The Bay of Bengal. Chennai is located on the coast facing the Bay of Bengal. So हम यहाँ पर Bay of Bengal को टिक करेंगे. Number 4. Which of the following is in Bangalore? A. Birla Mandir, B. Kapileshwar, C. Lotus Temple, D. Lal Bagh Garden. So which of the following is in Bengaluru? Lal Bagh Garden. तो यहाँ हम लाल बाग गार्डन को टिक करेंगे. नेक्स्ट नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग केम टू चेन्नई फर्स्ट? ऑप्शन है हमारे पास. ए. पोर्टुगीज, बी. ब्रिटिश, सी. डच, डी. जर्मन्स. सो विच ऑफ द फॉलोइंग केम टू चेन्नई फर्स्ट? Yes, A is correct. Portuguese. So यहाँ पर इसको टिक करेंगे. Part B. Fill in the blanks. Number 1. Dash is the capital of Tamil Nadu. So write down here Chennai. 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 Chennai is the capital of Tamil Nadu. Next, number 2. The Portuguese traders came to India nearly about dash years ago. Yes, so write down here 400. Number 3. The Nizam ruled dash for 7 जनरेशन. जो निजाम से उनकी 7 जनरेशन ने वहां पर राज किया, शासन किया. सो कहां पर शासन किया? यस, हैदराबाद. सो राइट डाउन हियर हैदराबाद. HYDERA हैदरा, BAD हैदराबाद. Okay, next.
Number 4, the Golconda Fort is important place of interest in. Yes, so Golconda Fort is important place of interest in Hyderabad. So write down here Hyderabad. Hyderabad, Hyderabad. Okay. So number 5, dash was established by Maharaja Martand Varma. So write down here Thiruvananthapuram. 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 Thiruvananthapuram was established by Maharaja Martand Varma. So this was your homework. ये आपका होमवर्क था जो आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया गया था. अगर आपको कहीं भी इसमें प्रॉब्लम आई है तो आप इस लेक्चर की हेल्प से इसको कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल डू पार्ट सी. राइट ट्रू टी यानी ट्रू के लिए और फॉल्स एफ अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. सो हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनमें हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है. ओके, सो जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है उसके लिए हमें टी यानी ट्रू और जो हमारी इनकरेक्ट है उसके लिए फॉल्स यानी एफ. ओके, सो नंबर 1, चेन्नई इज इन आंध्र प्रदेश. सो दिस इज फॉल्स. सो राइट डाउन हियर. यहां कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं एफ. इट मीन्स ये गलत स्टेटमेंट है, हमारी फॉल्स है. नेक्स्ट नंबर 2, the Portuguese built Fort St. George in 1644. Yes, this is true. Fort St. George 1644 में बनाया गया था और पोर्टुगीज के द्वारा. ओके, सो राइट डाउन हियर ट्रू टी. नेक्स्ट नंबर 3, Travancore was the capital of Thiruvananthapuram. So this is false. ये false है. So write down here F. Next, Hindustan Aeronautics Limited is situated in Bengaluru. So this is true. Yes, ये बेंगलुरु में है. Next, number 5, we can see the Charminar in Bengaluru. So this is false. So write down here F. Now part D, match the columns A and B. यहां पर हमें A कॉलम से B कॉलम को मैच करना है. ओके, सो नंबर 1, टीपूज प्लेस, कन्नड़, कपिलेश्वर, सालारजंग म्यूजियम, ओनम. ओके, बी कर्नाटका, बेंगलुरु, केरला, गोपुरम, हैदराबाद. ओके, सो नंबर 1 टीपूज प्लेस. सो टीपूज प्लेस कहां पर है? यस, हियर. नंबर 2 बेंगलुरु. नेक्स्ट कन्नड़, ये लैंग्वेज है. सो ये कहां की लैंग्वेज है? यस, कन्नड़, कर्नाटक. सो यहां हम इसे मैच करेंगे. नंबर 3 कपिलेश्वर. सो कपिलेश्वर टेम्पल ये कहां पर है? किस लिए फेमस है? गोपुरम. सो राइट डाउन यस, मैच इट गोपुरम. ओके, यहां हम इसको गोपुरम से मैच करेंगे. नंबर 4 सालारजंग म्यूजियम. सालारजंग म्यूजियम यस, ये कहां पर है? हैदराबाद में. नेक्स्ट ओनम. ओनम ये केरला का एक फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल. नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स. ओके, अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1,
What is the capital of Tamil Nadu? So write down. What is the capital, capital, capital of Tamil Nadu? Of Tamil So what is the capital of Tamil Nadu? So answer is Chennai is the capital of Tamil Nadu. Chennai is the capital of Tamil Nadu. AMIL, Tamil Nadu. So question is, what is the capital of Tamil Nadu? Answer is Chennai is the capital of Tamil Nadu. Next, question number 2. Name 2 places of interest in Chennai. Name 2 places of interest of Chennai. Name 2 places of interest in Chennai. Answer is, name 2 places of interest in Chennai. Answer is Fort St. George. Fort St. George. And St. Mary's Church. MARY post office Mary's Church. CHURCH Church. So answer is Fort St. George and St. Mary's Church. So question number 3. What was the earlier name of Chennai? What was the earlier name of Chennai? The answer is the earlier name of Chennai was Madras. आप इसको पूरे ऐसे भी लिख सकते हैं मद्रास. खाली अगर आप मद्रास लिखना चाहें तो आप मद्रास भी लिख सकते हैं. Okay. So the earlier name of Chennai was Madras. MADRAS.
DRAS, Madras. So question number 3. What was the earlier name of Chennai? Answer is the earlier name of Chennai was Madras. Next is question number 4. Name 2 wildlife parks located in Chennai. Two wildlife parks located in Chennai. In Chennai. CHENNAI, Chennai. So answer is the Snake Park and the children park. So question number 4. Name 2 wildlife park located in Chennai. Answer is the Snake Park and the Children's Park. Next question. Question number 5. Name 2 languages commonly spoken in Hyderabad. So name 2 languages commonly spoken in Hyderabad. Hyderabad. So question number 5. Name 2 languages commonly spoken in Hyderabad. So answer is, कौन सी 2 लैंग्वेजेस हैं जो हैदराबाद में बोली जाती हैं? तेलुगु एंड उर्दू. ओके. सो राइट डाउन 2 लैंग्वेजेस spoken in Hyderabad. In Hyderabad are Telugu and Urdu. And Urdu. URDU, Urdu. So question number 5. Name 2 languages commonly spoken in Hyderabad. Answer is 2 languages spoken in Hyderabad are Telugu and Urdu. Next, question number 6. What is the capital of Karnataka? Is the capital
of Karnataka. What is the capital of Karnataka? Answer is Bengaluru is the capital of Karnataka. Bengaluru is the capital of Karnataka. T-A-K-A, Karnataka. So Bengaluru is the capital of Karnataka. Okay, that's it. So read the chapter and learn question answers. Okay, and homework assignment will be uploaded at EdQuark and WhatsApp class group at 12 o'clock. Okay, so thank you. That's it.